Hello everyone, welcome back to the another tutorial of our Java programming series. In the last video we will discuss about the input classes in Java. तीन तरीके के इनपुट क्लास होते हैं जावा के अंदर. आप तीन तरीके से इनपुट ले सकते हो. यूज like a scanner class, console class and option pen class. These are the three classes you take a user input in Java. So लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था scanner class के बारे में. Now in this video we will discuss about the console class. So before wasting time I will open notepad and then write here basic structure of program. Console example, then here will be a public static void main, then string args. Okay, then here पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ. सेव फर्स्ट. अगर आपके पास पहले से फोल्डर बना हुआ है जिसके अंदर आप ये सारे एग्जाम्पल को सेव कर रहे हो और प्रैक्टिस कर रहे हो तो अच्छी बात है. अगर फोल्डर नहीं बना है तो पहले फोल्डर बनाओ, उसके अंदर फिर ये सब एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करो. सो आई हैव अ फोल्डर. आई विल ओपन माय फोल्डर. दिस इज माय फोल्डर. select this folder, then use example.java. So I have saved this first. Now use a console, then this input is a like a variable you can call as an object equals new, then use a System.console. This is a way you can create object in console class. इस तरीके से आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो कंसोल क्लास का. तो ये कंसोल क्लास के लिए आपको एक पैकेज भी डालना पड़ेगा जिसके अंदर ये प्रेजेंट है. So I will write here package import java.io. अगर आपको पता है कंसोल क्लास के बारे में तो यहाँ पर आप लिख सकते हो. अगर आपको नहीं पता तो आप एस्ट्रिक लगाकर ये ग्लोबली फाइंड करेगा, तो इसमें आपको मेंशन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कंसोल ही लिखना ही नहीं. बाय चांस आपको नहीं पता कंसोल की स्पेलिंग C capital है, C small है, then you will be use a asterisk here, then you will be easily understand. So अगर हम इससे एक इनपुट लें, इंटीजर इनपुट, तो कैसे लें हम? use a variable int a, then write here integer dot, so first character integer dot pass int. So here will be used this input variable you can call as object input dot read line. So this is way to take a user input, create a variable, then use this variable, take a input like integer. So I will show the first, compile this. पहले हम इसको चला लेते हैं फिर आगे बात करते हैं, ठीक है. So Java C, then use our class name console example.java, enter, then it will be a compile successfully. Now execute time. Java console.example.class file will be created.
enter, and it will be a take a user input. Right here I will be write 43, then it will be a successfully. I will not print this, so that is why it will be not show. एक तो इससे ले सकते हो आप यूज़र से इनपुट, क्रिएट ऑब्जेक्ट बनाकर, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके फिर उसको यूज़ करके आप ऐसे भी ले सकते हो, बट आप डायरेक्टली ऐसे भी ले सकते थे। इसका ऑब्जेक्ट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो हम वो तरीका भी देखेंगे कैसे लेते हैं। देन यू विल बी सी नाउ you if you have a no need to object, then how can use this way to take a input from user using a console class. So I will show right here int like a b request, then integer dot pass int, then here you'll use system dot console dot read line. This is the way you will be you take this user input. इस तरीके से भी आप यूज़र से इनपुट ले सकते हो लाइक इंटीजर। तो इस लाइन के लिए अगर आप ऐसे लिखोगे system.console.readline, this way if you use this way, then you don't need a import any package classes. अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो आपको पैकेज क्लास की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। So now if I take a like character like float, then use a f variable name, then use float dot pass float, then as it is I will copy here this. So if I show the output system.out.print, then /t enter the integer value, then print ln value of your inputted value is, then use a variable name like a. I will copy as it is this line, and then here you will be use b variable, though as it is I will copy this line use for here. So here it will change message into the floating values. Use simply Control D, then it will be a copy, and then use Control Shift arrow key, then it will be a down. ऐसे आप इसको नीचे ला सकते हो। आप शॉर्टकट की यूज़ करना Control Shift arrow की। So here will be a provide floating point, then plus f, change the message
this. Whatever you write, I have a like this message here. It depends you totally. If you write a message, then it's a good practice for programming. अगर आप नहीं भी लिखोगे फिर भी चलेगा. So first I will compile this. Here will be an error, something missing here. Okay, here will be a missing a semicolon. Then one more, it will be a compiled successfully. Close this. Then enter an integer value like 34. Your input value is 34. Like 56, your input value is 56. Like floating point something, your floating value is this. If you take a character as it is, I will copy this. मैं सेम इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ. So I will copy this, then I will paste here. Change here data type. अब यहाँ पर आप डेटा टाइप चेंज करना चाहो तो जो भी आपको डेटा लेना है तो वो कर लो आप यहाँ पर चेंज. मैंने करेक्टर लेना है तो मैंने करेक्ट टाइप का एक वेरिएबल बनाया. सो हियर आपको यहाँ पर ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप करेक्टर ले रहे हो. यूज़ हियर डॉट कैरेट. चेंज हियर मैसेज. Let's check. Compile successfully, then use and enter your character. So this is a way you take a character value using a console class like string. So as it is, copy this, then paste here. Change here message. Sentence. Here string variable use here, then str, this is a variable name, then your string input value is a variable name is str. So check here, compile, clear screen, CLS, and execute. Like 34, 43, then 34 point संख्या वाली, then enter a character like y, your input this, then enter a sentence. Hello, how are you? Oh, enter. This is a your inputted string value. This is the way you will be use a scanner like console class to take a user input. I hope you will be easily understand this. If you are really enjoy this video, please share this video with your friends. Thank you for watching this video. Thank you.